Polysaccharide, we have discussed glycogen, starch, and cellulose. Now, it comes to the next topic, that is inulin. The inulin actually, first of all, it is plant storage polysaccharide. It is plant storage polysaccharide present in roots and tubers of dahlia plant. This is actually branched with fructose as subunit. ठीक है, ये fructose से बना है. So it is the polymer of fructose, and it is with beta 1,2 glycosidic. एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे खाली आप लोग को याद रखना है कि एनसीईआरटी में तो इन्यूलिन दिया नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पे लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेड अप ऑफ व्हाट ना फ्रुक्टोज, सेकंड है ये ब्रास्ट है. ये दो चीज मेनली याद रखना है. एंड थर्ड पॉइंट जो मैं ऐड करूंगा, जो एक्सप्रेशन रिलेटेड पॉइंट है, नो एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी to metabolize the inulin. So, अगर आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए ह्यूमन बॉडी में एब्सेंट है, तो क्या होगा? इन्यूलिन आप जितना इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, उतना ही इन्यूलिन आपका एक्सक्रेट भी हो जाएगा विदाउट एनी मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन में डिफरेंस आप लोग जानते हैं? What is the difference between the digestion and metabolism? Digestion means the conversion of large complex into small, simple and soluble, which is to be takes place inside the alimentary canal, and वो simple soluble होने के बाद blood में आ जाता है, and through that blood, that simple and absorbable form through that blood will passes to each and every cell. तो वो जो स्मॉल एंड सिंपल है वो सेल के अंदर एंट्री करता है. सेल के अंदर एंट्री करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करते हैं, हम लोग स्टार्च खाते हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में. तो ग्लूकोज पासेस थ्रू द ब्लड एंटर इनटू व्हाट इन डिफरेंट सेल्स. तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री करने के बाद मेटाबोलाइज होता है कि नहीं? ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ना कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज व्हाट ना वाटर मॉलिक्यूल विद द रिलीज ऑफ एटीपी. तो ये जो कन्वर्सन हुआ, ये जो चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट एंड that is what na soluble substances cannot be break down further, cannot be hydrolyzed further, cannot be digest further, but metabolize further. बात को समझ में आया कि नहीं? भी cannot be hydrolyzed मतलब cannot be digest further, but इसको आप metabolize कर सकते हैं. metabolize कहाँ पे होता है? inside the cell. The enzyme present in the cell, that is cytoplasmic enzyme and nuclear enzyme. So likewise, inulin को हम digest भी नहीं कर सकते हैं, number one. Number two, ये सेल के अंदर एंट्री करेगा, सॉरी सेल के अंदर तो एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है, तो ब्लड के थ्रू ये फिल्टर होके यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट हो जाएगा सेम अमाउंट.
दैट इज वाई इसका क्लिनिकल यूज क्या है, इसीलिए दैट इज वाई इट इज used to calculate the GFR, glomerular filtration rate, means testing of kidney function. We used to measure GFR, that is testing of kidney function. So this is all about the inulin. Now we are coming to chitin. Chitin is a animal structural polysaccharide. Is an animal structural polysaccharide present in exoskeleton of arthropods. Exoskeletons of arthropods. And also present in what? कहाँ पे present है? Fungal cellulose. So it is the polymer of N-acetyl glucosamine. So it is actually the polymer of N-acetyl glucosamine, and it is unbranched and formed of beta 1,4 glycosidic bond. बॉन्ड यहाँ पे बहुत जरूरी नहीं है, बॉन्ड मेनली तीनों का इंपॉर्टेंट था, मैंने कौन सा बताया था, फर्स्ट तीन, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज। ठीक है, अब काइटिन सॉरी इन्यूलिन आप याद रख सकते हो, बट काइटिन वगैरह तो बिल्कुल नहीं, इसमें खाली सब यूनिट ही इंपॉर्टेंट है एंड कहाँ पे लोकेशन है, वेदर इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड और इट इज होमोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, बी स्पेसिफिक कि हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, बट किस चीज को हम लोग को मेनली याद रखना है, किस चीज पे ऊपर ज्यादा हम लोग का रहेगा फोकस कि भाई यही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन रहता है, वो भी बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड it is formed of different type of subunit, is formed of different type of subunit। तो इसके अंदर हम लोग पहले आते हैं, दो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक तो पेप्टिडोग्लाइकन, दूसरा क्या है, हाइलुरोनिक एसिड। तो फर्स्ट आते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। इसका जो सब यूनिट है N-acetyl glucosamine and N-acetyl uramic acid। N-acetyl glucosamine and N-acetyl uramic acid। बाकी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा
कि lysozyme is called as what ना bactericidal enzyme, right? तो आप कभी फील किए कि lysozyme how it is actually kill the bacteria, how it is break down the cell wall of bacteria? Because the cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan. The cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan, and peptidoglycan क्या है ना, एक कार्बोहाइड्रेट है, उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है. एंड ये जो लाइसोजाइम है वो उस बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम that is actually break down the glycosidic bond between this peptidoglycan. Can you tell me the virus also contains the lysozyme enzyme? True or false? A virus, certain virus also possess the that is cell that is enzyme which is present or absent. बोलिए, lysozyme is present in certain viruses. True or false? False. बहुत सिंपल है बेटा, ट्रू है. दिमाग लगाना चाहिए कि those virus which enter into bacteria called as bacteriophage. तो bacteriophage कैसे बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करता है? उनके पास भी तो बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम प्रेजेंट होगा ना. थिंक ट्वाइस एट लीस्ट बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन. ये मैं अगर पूछ रहा हूं, इतना इजी तो नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है ना? So it is present in cell wall of bacteria which is degraded by lysozyme. Which is degraded by lysozyme, which is present in saliva, tear, bacteriophage, so this is all about the peptidoglycan. Now we are coming to the next, hyaluronic acid. हाइलुरोनिक एसिड हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यू में, याद है? So it is formed of D and acetyl glucosamine. D and acetyl glucosamine and that is D-glucuronic acid. And as already I told you in the tissue chapter, hyaluronic acid which is present in the connective tissue, especially tendon and cartilage में ये present है. And tendon and cartilage को क्या बोलता है ना, ये top flexibility and toughness provide करता है because of this hyaluronic acid. So this is all about your different type of polysaccharide. हम homopolysaccharide and heteropolysaccharide. देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोला जाए तो इससे बिल्कुल ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा खाली बोल देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ. एक्चुअली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स आर देयर. कितने टाइप का पॉलीसैकेराइड है? 3 डिफरेंट टाइप.
And what are the three different type of polysaccharide? Now, number one is storage polysaccharide, जो हम लोग पढ़ चुके हैं. Number two is structural polysaccharide, and number three is mucopolysaccharide. अभी हम लोग एग्जाम्पल पढ़े हैं, तो बताइए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के अंदर कौन कौन आएगा? ओके, ग्लाइकोजन, स्टार्च, और कोई है? वेरी गुड, इन्यूलिन. Inulin. स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में कौन आएगा? काइटिन आ जाएगा, सेलुलोज आएगा, और बताइए कौन होगा? पेप्टिडोग्लाइकन. वेरी गुड. नाउ म्यूकोपॉलीसैकेराइड में कौन कौन एग्जांपल आएगा? एक कुछ चीज मैं बता चुका हूं, दैट इज व्हाट ना, हाइलुरोनिक एसिड. पेक्टिन, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन. यहाँ पे स्ट्रक्चरल में आता है तो यहाँ पे हो जाएगा पेक्टिन. देन हाइलुरोनिक एसिड, देन अगर अगर का नाम सुने हो ना? देन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हेपारिन. ये सब भी पॉलीसेकेराइड है, बट दीज आर म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जिसमें म्यूसिन्स प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है. ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग को बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़ा सा के लिए आइडिया दे दिया, दैट्स इनफ, सफिशिएंट. Now the point is, why the polysaccharides are ideal for storage? Why? Why the monosaccharides, why the oligosaccharides are not ideal for this storage? पहली बात तो ये है कि ये बल्क में होता है. बहुत ज्यादा बल्क होने से क्या है ना, बहुत ज्यादा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा. जितना ज्यादा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा उतना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा. जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, दैट विल बी केमिकली नॉन रिएक्टिव एंड ऑस्मोटिकली इनएक्टिव. ये 3 पॉइंट है. पॉलीसैकेराइड ideal for storage. Number one, present in bulk. Number two, osmotically inactive. Number three, chemically non-reactive. Completed. So we are coming to the next biomolecule.
अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की बात करें this is actually a structure of amino acid where the C, the central carbon which is attached with the carboxylic group and amino group and a hydrogen group, ये तीनों क्या है, constant है, same for all amino acid. So what is actually different for the different amino acid? ना R group. So R group actually the variable group, and this C is called actually what? Na alpha carbon. Why it is called as alpha carbon? Because it is attached to the functional group. As it is attached to the functional group, so the central carbon is alpha carbon, and that is why the every amino acids are called as what? Na alpha amino acids. इसीलिए इसको हम लोग अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं, बिकॉज सेंट्रल कार्बन हर एवरी अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन होता है. Now the next is amino acids are substituted methane. ये एनसीईआरटी का लाइन है. The amino acids are substituted methane as the 4 substituent group. अब देख सकते हैं 4 substituent group आपके सामने है. The 4 substituent group occupy the 4 valency of carbon. As it is occupying the 4 valency of the carbon by the 4 substituent group, that is why the amino acids are called as substituted methane. याद रहेगा ये पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना. Now we are coming to the different type of amino acids. अमाइनो एसिड्स का बहुत सारा वैरायटी है, हम वन बाय वन जाएंगे. जैसे कि फर्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन द बॉडी. अगर बॉडी में कोई अमीनो एसिड नॉर्मली सिंथेसिस होगा, तो will that amino acid need from the externally? Then that amino acid is called as what? Non-essential, because that amino acid is already being synthesized in your body, so it is not required from the external source. And if the amino acid being not synthesized in your body, means we need it required to be externally, that is called as essential. Actually, practically, essential, non-essential as per NCERT, मैं पहले ही बोल देता हूँ, as per NCERT, essential, non-essential 10-10 है. तो टोटल अमीनो एसिड का नंबर कितना हो गया? 20. बट इज इट ट्रू दैट कि अमीनो एसिड नंबर ओनली 20 है? तो यहाँ पे फिर से और थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि अमीनो एसिड्स which form the protein are called as protein amino acid. And apart from the protein amino acid, there are so many different type of non-protein amino acids are there. And 20 amino acid which are helps in the protein formation, so called as 20 protein amino acid. And वही 20 protein amino acid को हम लोग डिवाइड करते हैं into essential and non-essential. 10-10. ये एक्चुअली एज पर द एनसीईआरटी है. लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और ब्रॉड जाए,
तो यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी आ जाता है, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल. 2 amino acids are there which is synthesized in your body but very slowly. अगर slowly synthesized है means you need to get that amino acid also from the external side. तो आप इसको क्या बोलेंगे, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल की सेमी एसेंशियल. इसीलिए 8 to 10 आपको समझे. सो गेट इट दैट. फर्स्ट आते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड. So not synthesized by human body. Not synthesized by human body. So must be obtained from food. ये 8 है, लाइसिन, मिथियोनाइन, फिनाइल एलेनिन, tryptophan. Tryptophan is actually the most essential amino acid. Valine, isoleucine, leucine, and threonine. ये था essential. Number 2 is semi-essential. Semi-essential amino acid that is synthesized very slowly by human body. That is why it also required externally through the food. ये हो गया 2 arginine and histidine. And जैसे कि मैंने बोला, these two are actually, as per NCERT, both regarded as essential. 10 in number as per NCERT. हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दिए, बट आप लोग एसेंशियल को 10 ही मानेंगे, ठीक है. कंप्लीट है क्या? चले नेक्स्ट पेज में. कमिंग टू द नंबर 3. तो फास्ट करिए. हाँ सर हो गया. तो इतना जोर से मत बोल, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा यहाँ पे. आएगा कौन? चले क्या? नंबर 3, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड.
non-essential amino acid that is synthesized in our body. So no need from diet. This is 10 in number. Alanine, cysteine, glutamate or glutamic acid, glycine. ग्लाइसिन को क्या बोलते हैं? द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन है? ग्लाइसिन. प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड और एस्पारेट. जैसे ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट बोलते हैं, वैसे एस्पार्टिक एसिड को एस्पारेट बोलते हैं. देन एस्पाराजीन, ग्लूटामिन, सेरीन एंड टाइरोसिन. So this is actually the classification number A on the basis of what? The synthesis takes place in your body, whether it is synthesized or not synthesized. अभी हम लोग सेकेंड में आते हैं. मैंने आपको बोला था कि आर ग्रुप क्या है, वो फ्लक्चुएट करता है. सबके केस में सेम है कि डिफरेंट है. सो ऑन द बेसिस ऑफ आर, एक चीज आप लोग देख चुके हैं कि अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक एमिनो ग्रुप है. मतलब एक एसिडिक ग्रुप है, दूसरा बेसिक ग्रुप, राइट? तो पहले से ही वो न्यूट्रल है. आर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एक्चुअली एसिडिक नेचर अमीनो एसिड होगा कि बेसिक नेचर होगा. If the R group contains an extra acidic group, then an amino acid becomes what? Na acidic. Extra basic group, basic amino acid. Alcoholic group, alcoholic amino acid. समझ में आ रहा है? So on the basis of R group, अगर ना बेसिक ग्रुप होगा ना एसिडिक ग्रुप होगा, देन उस एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल. तो फर्स्ट आते हैं एसिडिक एमिनो एसिड. नंबर 1, acidic amino acid with extra carboxylic group. Glutamic acid, aspartic acid, etc. So this is actually the structure of aspartic acid. And here structure of what now? Glutamic acid. कुछ एमिनो एसिड है जिनका एक्चुअली 3 अलग अलग टाइप का नाम है. ये तो पूरा कंप्लीट नेम है कि ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड,
Some amino acid also have three different type of name. Full name. Second is three letter name. And third is single letter name. जैसे ये क्या है? कंप्लीट है. समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्लूटामिक एसिड का थ्री लेटर नेम क्या है ना? GLU. एंड उसका सिंगल लेटर का नाम क्या है? कैपिटल E. ठीक है? कैपिटल E GLU ग्लूटामिक एसिड सेम है. कंप्लीट है क्या? कमिंग टू नंबर 2. बेसिक एमिनोस. with extra basic group. एग्जाम्पल देते हैं हम लोग. लाइसिन अर्जिनिन. This is the structure of lysine. Number 3, neutral amino acid. One carboxylic group and one amino group. Example, valine, alanine, glycine, leucine, isoleucine, as already told, the glycine is the most. Why the glycine is the most simplest amino acid? Because the R group contains only the hydrogens. ये सबसे simplest amino acid होगा. And second is this is the structure of alanine. Number 4, sulfur containing amino acid. सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड में यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होगा. एग्जांपल देते हैं. सिस्टीन, मिथ्योनिन, this is the structure of cysteine. CYS or simply C.
कंप्लीट है क्या? कंफर्म करिएगा मुझे, नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। फिनिश्ड। नंबर 5, अल्कोहलिक एमिनो एसिड। तो यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप होगा। सेरीन हो गया, थ्रियोनाइन हो गया। This is actually the structure of serine. Number 6, hydroxyl or heterocyclic amino acid. Number 6, heterocyclic amino acid. Here the nitrogen present in a ring. Nitrogen here present in the ring. Example देते हैं, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, हिस्टिडीन, this is actually the structure of proline. And this is the structure of hydroxyproline. Complete है? Now comes to the number 7, aromatic amino acid. पहली बात तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि एरोमेटिक एमिनो एसिड ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड? अनब्रांच्ड, स्ट्रेट साइड चेन with aromatic group or benzene. एग्जाम्पल देते हैं, फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन,
tryptophan, phenylalanine, इसका शॉर्टकट नेम PHE और F, टाइरोसिन TYRY, and tryptophan TRPW. ये हो गया फिनाइलएलानाइन, ये हो गया ट्रिप्टोफैन। सॉरी ये टाइरोसिन, I'm sorry, टाइरोसिन। ये क्या है? सेंट्रल कार्बन, दिख रहा है आपको? नहीं दिखा? ये क्या है? एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप। ये क्या है? आर ग्रुप। समझ में आया? So this is the end of the second classification on the basis of what? On the basis of what? Type of R group. अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसका नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रेशन की डिहाइड्रेशन। पेप्टाइड जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता था वन अल्कोहलिक ग्रुप विद द एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ अनदर, वैसे यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करेगा? So it is takes place between amino group of one amino acid and carboxylic group of another amino acid. To release one water molecule. So this is dehydration. तो इसीलिए बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? पॉलीपेप्टाइड चेन। हो गया सबका ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्यूटेरियन फॉर्म जो क्वेश्चंस में रहता है, वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा।
This is cation. This is anion. This is deuterium. Now, deuterium को अदरवाइज क्या बोलते हैं? ना डाइपोलर और बाइपोलर है। आप देख सकते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बोथ है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइपोलर और बाइपोलर। पॉइंट ये है कि अमीनो एसिड कैन बी एग्जिस्ट इन आइदर एनायनिक फॉर्म, cationic form, also in the deuterium form. Depends on the pH of the solution. Depends on the pH of the solution. तो ये ड्यूटेरियन फॉर्म और डाइपोलर आयन किस पीएच में एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज 7.3 पीएच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दैट इज 7.3 पीएच, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं नियरली न्यूट्रल। So approximately at the nearly neutral pH, the amino acid exhibit the deuterian form. तो इस pH से कम होगा pH तो किस फॉर्म में एग्जिबिट करेगा? cationic फॉर्म। एंड इस pH से अगर ज्यादा हो गया तो किस फॉर्म में एग्जिबिट करेगा? anionic फॉर्म। सिंपल है। इसको फिजियोलॉजिकल pH भी बोलते हैं। pH को फिजियोलॉजिकल pH भी बोलते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, फिजियोलॉजिकल pH, नियरली न्यूट्रल pH in which the dipolar or bipolar and deuterium form is exhibited. Complete है? Now write some functions of amino acid. Complete हो गया तो मुझे बोलिएगा। Complete है? So please write everyone. Function of amino acid. Function of amino acid. देखिए कुछ कुछ चीज आप लोग को पता है कि थायरोक्सिन क्या है? प्रोटीन अमीनो एसिड, स्टेरॉइड सॉरी प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, आयोडोथायरोनिन हार्मोन, क्या है वो? Iodothyronine hormone, but it is also a derivative of what amino acid? Which amino acid derivative? Tyrosine gives rise to thyroxine. तो थायरोक्सिन को अदरवाइज क्या बोलते हैं हम लोग? द आयोडीनेटेड टाइरोसिन। क्या बोलते हैं? इसीलिए ध्यान दीजिएगा आपके बॉडी में ऐसे बहुत सारा हार्मोन है जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। सो राइट नंबर 1, टाइरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू tyrosine is converted into thyroxine, adrenaline, melanin, etc. So thyroxine, adrenaline and melanin, these are the derivative of which amino acid? ये है first question, tyrosine amino acid, right? Number 2, glycine forms heme. So heme and globin together to form what? Hemoglobin. तो उस heme में जो amino acid present है that is which? Na glycine, the simplest amino acid. Number 3, tryptophan forms vitamin B3 or nicotinamide. Tryptophan forms the vitamin B3 or nicotinamide
कॉमा ऑक्सीन, प्लांट हार्मोन है ना, AUXINE ऑक्सीन। ऑक्सीन का अदर नेम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो ऑक्सीन कॉमा मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। So what are the derivative of tryptophan? Vitamin B3, ऑक्सीन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। तो दो डिफरेंस है, मेलानिन, मेलाटोनिन। मेलानिन डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन, ठीक है, लेकिन मेलाटोनिन डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन। एंड दीज बोथ टू आर व्हाट? डेरिवेटिव के, सॉरी एरोमेटिक की, दैट इज एलिफेटिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक। मैं यहाँ पे और एक चीज बोल रहा हूँ, 3 एमिनो एसिड जो एरोमेटिक है, क्या क्या है? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन। रेस्ट ऑल एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? एलिफेटिक एमिनो एसिड। ओके, so this is the functions of the different type of amino acids। बाकी ऐसे बहुत सारा चीज है जो मैं आपको एक्चुअली यहाँ पे स्किप करना चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ। जैसे कि मैं छोटा सा एक आइडिया देखो, आप लोग सुनो एंटीबायोटिक, हम लोग रेगुलर बेसिस में खाते हैं ना। एंटीबायोटिक एक्चुअली इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है कि वायरस के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है? वायरल डिजीज के लिए एंटीबायोटिक यूज नहीं किया जाता है, याद रखिए। तो फिर हम लोग फीवर वगैरह होता है तो वाई वी आर यूजिंग एंटीबायोटिक? फीवर तो वायरल डिजीज, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वायरल डिजीज, जैसे कि कोविड के टाइम में हम लोग हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक क्यों खाते हैं? बोलिए ना, वायरल डिजीज के अगेंस्ट में अगर इफेक्टिव नहीं है तो वाई तो एक्चुअली एंटीबायोटिक बीइंग यूज्ड फॉर द वायरल इन्फेक्शन। हाँ, एक्चुअली बैक्टीरिया आपके बॉडी में तभी एंट्री कर पाएंगे, तभी आपको इन्फेक्ट करेंगे जब आपका इम्यून सिस्टम पुअर होगा, वीक होगा। एंड वायरस, हमेशा याद रखिए, ऑलवेज वायरस आपके बॉडी का किसी भी ऑर्गन को अटैक नहीं करते हैं। किसको अटैक करते हैं? इम्यून सेल्स को अटैक करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन योर इम्यूनिटी बिकम्स वीक। एंड अगर इम्यूनिटी वीक हो गया तो different type of secondary infection will start including bacterial infection। एंड उसको रिमेडी करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या चाहिए? एंटीबायोटिक चाहिए। सो एंटीबायोटिक इज नॉट द प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी दैट इज व्हाट ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज, बट इट इज द सेकेंडरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स। क्या नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड बोला था ना? 20 एमिनो एसिड को छोड़ने के बाद बाकी जो एमिनो एसिड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑर्निथाइन साइकिल पढ़े हैं, लीवर के अंदर होता है यूरिया साइकिल, अदरवाइज कॉल्ड एज ऑर्निथाइन साइकिल, पढ़े हो ना? तो ऑर्निथाइन साइकिल में बहुत सारे एमिनो एसिड के इन्वॉल्वमेंट है, मोस्टली ऑर्निथिन, साइट्रुलिन, पढ़े हो ना? वो सब क्या है? प्रोटीन एमिनो एसिड की नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड? नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड। नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है एंटीबायोटिक। बहुत सारा चीज है, मैं एक्चुअली यहाँ पे सब बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत अलग अलग चैप्टर में आएगा। सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर की होमोपॉलीमर? Why the proteins are heteropolymer? It is present in the retentate or it is present in the filtrate, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, मैक्रोमोलिक्यूल, एंड इट इज मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट एमिनो एसिड। अभी आप लोग बात कर चुके हैं, अगर एक प्रोटीन में बहुत सारे वैरायटी का एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा, so obviously that will be called as what? Na heteropolymer।
It is the heteropolymer of different amino acid linked with peptide bond. So what is the difference between the polypeptide and protein? Tell me. Need minimum 50 amino acid to become protein. प्रोटीन होने के लिए कितना एमिनो एसिड मिनिमम चाहिए? 50. अगर 50 एमिनो एसिड से कम हुआ, that will be not called as what na protein, will be called as only polypeptide. तो polypeptide and protein में यही difference. Protein will be applicable only when the minimum 50 amino acid will be present. Otherwise, that will be called as simply polypeptide. And protein and enzyme में क्या difference है? All proteins are enzyme की all enzymes are protein. All enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. And enzymes are structurally tertiary protein. Primary, secondary, tertiary, quaternary. हम पढ़ेंगे इसके बाद. कोई दिक्कत है? So point, everybody please write. Collagen present कहाँ पे? Collagen fiber, connective tissue याद है? Collagen, the most abundant protein in animal world. Collagen is the most abundant protein in the animal world. Whereas Rubisco का फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज बाइफॉस्फेट carboxylase oxygenase. Rubisco is the most abundant protein in the biosphere. Rubisco, the most abundant protein in the biosphere, whereas collagen is the most abundant protein in the animal world. इसमें कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो बोलिए. हम सीधा चलेंगे अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. स्टार्ट करें? गुड, बोलिए. हाँ, है तो बहुत सारे नोमेनक्लेचर है उसका. नहीं जानेंगे तो बेटर है, क्योंकि ये भी बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है. जो ट्रिपल नेम मैंने बताया, सिंगल लेटर वाला बताया, उसको भी आप स्किप करें तो आपके भला होगा आपके लिए. आप भूल जाइए. सुने, समझे, विजुअलाइज हुआ, जाने की एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, अब भूल जाइए. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ हमेशा नॉलेज अगर आपको कहीं से मिलता है ना, बेझिझक नॉलेज हमेशा गेन करिए, है कि नहीं? गेनिंग ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज गुड फॉर द हेल्थ एंड फॉर द ब्रेन. नॉलेज कभी भी लेना कभी भी बंद मत करिएगा. जिस दिन आप नॉलेज लेना बंद कर दिए, किसी से ज्ञान लेना बंद कर दिए, मतलब आप अपने आप को समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हमको सब आता है, मतलब उसी दिन से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ. समझे कि नहीं? तो कभी भी इनपुट करना बंद मत करिएगा. अगर बहुत ज्यादा ज्ञानी है तो आप किसी को बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ज्ञान बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है. अरे समझे कि नहीं? तो इसीलिए ज्ञान मेरे से लीजिए और अपना गम मेरे साथ शेयर करिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नंबर 1, प्राइमरी स्ट्रक्चर. सपोज टू बी एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही यूनिक टाइप का है. सपोज टू बी ये पूछा गया कि सपोज टू बी अ साइंटिस्ट नीड टू experiment on a protein to know
the position of the different amino acid, the type of the different amino acid, the sequence of the different amino acid, which type of protein he or she should consider for this experiment. Primary, secondary, tertiary, quaternary. क्यों भाई? प्राइमरी सबसे सिंपलेस्ट है स्ट्रक्चरली, तो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है तो उसमें आप आराम से एक एक एमिनो एसिड के ऊपर स्टडी कर सकते हैं. What is the amino acid types present? What are the sequence of the different amino acid? The numbering of the amino acid. समझ में आ रहा है? Number, position, type, and sequence of amino acid can be studied. This is the structurally the simplest protein. मान लेते हैं ये एक एमिनो एसिड, सर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. This is actually the first amino acid. This is supposed to be the last amino acid. तो ये लेफ्ट साइड हो गया कि राइट साइड हो गया? तो लेफ्ट साइड में जो है वो फर्स्ट एमिनो एसिड, एंड जो राइट साइड में है दैट इज द लास्ट एमिनो एसिड. एंड एमिनो एसिड हम लोग अभी देखे कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है, and in between the two different amino acid, the carboxylic and amino group to form the peptide bond with the release of water molecule. So first amino acid का amino group free रहता है, that is why it is called as N terminal. N terminal end with free amino group, and the last amino acid having carboxylic group which is free, that is called as C terminal. So this is C terminal end, this is N terminal end. N terminal end में क्या होगा ना, फ्री अमाइनो ग्रुप. The C terminal with the free carboxylic group. अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको एक एमिनो एसिड ऐड करना है टू दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन, अगर आपको एक एमिनो एसिड ऐड करना है, so that should be add in the right side or that should be add in the left side. मतलब N टर्मिनल में वो बाइंड करेगा, ऐड होगा कि C टर्मिनल में वो बाइंड करेगा. Addition of the amino acid always takes place in the last. जो पूरा एंड में होगा वही तो ऐड होगा, लेकिन आपको अगर रिमूव करना है एमिनो एसिड, सेपरेशन ऑफ द एमिनो एसिड फ्रॉम विच एंड? एन टर्मिनल की सी टर्मिनल. और यहीं पे बच्चे धोखा खाते हैं, गलत करके आते हैं, इसलिए मैंने पूछा. बोथ, separation of the amino acid from both end, addition of the amino acid only at, समझे? Both N and C terminal. अब ना किसी भी चीज को अगर आपको समझना है तो हर एक
चीज के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा। ये आप सोचेंगे कि इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना ए भाई, इसको लर्न करना पड़ेगा कि नहीं, कि भाई एडिशन होता है सी टर्मिनल में, रिमूवल होता है बोथ एन एंड सी। नहीं, नहीं रट्टा मारना है, उसका लिंक है नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्या है वो बताता हूँ। आप लोग जानते हैं पेप्टिडेज, पेप्टिडेज का मतलब क्या है, दोज हु क्लीव द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, मतलब पेप्टिडेज को आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, राइट। एंड पेप्टिडेज दो टाइप का, वेरी गुड, एक होता है एक्सोपेप्टिडेज, दूसरा है एंडोपेप्टिडेज। अब बताइए, ये सपोज टू बी एक पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दीज आर द डिफरेंट अमाइनो एसिड दे एग्जिबिट, ठीक है। अब पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि सपोज टू बी the amino acid will be, sorry, peptide bond will be break in the side, मतलब एक्सो, एक्सो का मतलब क्या है ना, those who cleave the peptide bond externally will leads to removal of amino acid, yes or no, है कि नहीं। जो एकदम साइड में कट करेगा वो क्या करेगा ना, अमीनो एसिड को रिलीज किया, मान लेते हैं ये हो गया आपका एन टर्मिनल एंड दिस इज सपोज टू द सी टर्मिनल। तो मैंने आपको क्या बोला कि the breakdown of the peptide bond takes place in both C terminal as well as in the N terminal. तो that gives rise to the releasing of what, individual amino acid release होगा कि नहीं यहाँ पे C terminal में as well as, that is why exopeptidase is two type, एक है carboxypeptidase, दूसरा है aminopeptidase। अब बताइए, ये दोनों वर्ड तो आप जानते हो, carboxypeptidase is a pancreatic enzyme whereas aminopeptidase is a intestinal or succus centricus enzyme। ये नाम जानते हैं कि नहीं। तो ये दोनों एक्सोपेप्टिडेज हुआ कि एंडोपेप्टिडेज हुआ। carboxypeptidase will cleave the amino acid, break the peptide bond in C terminal, that is by carboxy, and aminopeptidase will break the peptide bond at end terminal। इसीलिए मैंने बोला था बोथ एंड में ब्रेक हो सकता है। बाकी आपके पास जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है सारे के सारे क्या होंगे, एंडोपेप्टिडेज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सो एंड एंडो, में एक्सोपेप्टिडेज क्लीव करेगा तो अमीनो एसिड इंडिविजुअल रिलीज होगा, यस और नो। लेकिन अगर एंडोपेप्टिडेज कट करता है, मान लेते हैं एंडोपेप्टिडेज यहाँ पे क्लीव किया, तो आपको इंडिविजुअल अमीनो एसिड मिल रहा है कि ब्रेक शॉर्ट पेप्टाइड मिल रहा है, हाँ। इसलिए एंडोपेप्टिडेज will release the short peptide with the digestion, whereas exopeptidase will release amino acids, ठीक। तो आप एक्सोपेप्टिडेज और एंडोपेप्टिडेज के एग्जांपल क्या दे सकते हैं, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइमोट्रिप्सिन, etc। रिएक्शन ठीक से होता नहीं होगा, खाली सी टर्मिनल में होगा, एन टर्मिनल में नहीं होगा। एडिशन हमेशा लास्ट में होता है, लास्ट वाला कौन है, कंप्लीट है सबका। हम्म, इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डाइजेशन चैप्टर। So I'm coming to secondary, ये था प्राइमरी। सेकेंडरी प्रोटीन,
Actually, this is the modification of primary one. The modification of the primary structure protein. And यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप का secondary protein है. That is alpha helix, beta pleated, collagen helix. This is N terminal, this is C terminal. यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर है. एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि एवरी फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में these are supposed to the amino acid. मान लेते हैं suppose to this is 1, this is 2, this is 3, this is supposed to be 4, this is 5, this is 6, 7, 8. तो every fourth amino acid के बीच में यहाँ पे क्या है ना, additional hydrogen bonds. And that additional hydrogen bond is called as what? इंट्रा है कि यहाँ पे इंटर है? इंट्रा एंड इंटर में डिफरेंस क्या है ना, विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड की विद इन द डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड है कि नहीं? फर्स्ट एंड 4 के बीच में, सेकेंड एंड 2 के बीच में. दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर hydrogen bond, as the bond which is takes place in between the same polypeptide chain. That is why it is called as intramolecular hydrogen bond, and that is takes place in between the every fourth amino acid. इसका एग्जांपल देते हैं. केराटिन. केराटिन को इसीलिए बोलते हैं अल्फा केराटिन, as it is made up of alpha helical structure. तो केराटिन is a structurally made up of which protein? Structurally keratin is a which protein? A secondary protein. And secondary में भी कौन सा type? Alpha helix. This is N C C N N C. Here the bond which is takes place between the two different polypeptide chain की same polypeptide chain. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर की इंट्रा. This is intermolecular hydrogen bond. And ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? एंटी पैरेलल. And this is the example we can say. क्या दे सकते एग्जाम्पल? फिब्रोइन. एंड फिब्रोइन मैंने आपको बोला था नेचुरल सिल्क याद है? एंड दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द स्पाइडर वेब. स्पाइडर का जो वेब है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ फिब्रोइन प्रोटीन.
Fibrin protein is actually the beta pleated form comes under the secondary protein. And the last one. Here also. The bond, hydrogen bond is takes place between the same polypeptide chain or different polypeptide chain. देखिए तो सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में है कि डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में है डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर एग्जिबिटिंग हियर 3 ट्रिपल पेप्टाइड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल पेप्टाइड है ये भी एंटी पैरेलल है एंड हियर आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर की इंट्रामॉलिक्यूलर intermolecular as it is takes place between the different polypeptide chain so intermolecular and सबसे important है with locking effect of proline and hydroxyproline अभी पढ़ा था कि प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन आर एक्चुअली हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड पढ़े थे ना तो ये प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन यहाँ पे एक एडिशनल एमिनो एसिड है जिसके वजह से एक इंटरलॉकिंग का काम करता है अभी इंटरलॉकिंग अवार्ड बहुत फेमस हुआ था अभी रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल हो गया तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम अगर फेल हो जाएगा तो ये जो कोलाजन का जो हार्डनेस है वो कंटिन्यू करेगा हम लोग पढ़े हैं कि that is collagen is the hardest protein that is present in your connective tissue तो ये जो हार्ड है स्ट्रेंथ है जो टफनेस है बिकॉज ऑफ व्हाट लॉकिंग इफेक्ट एंड दैट लॉकिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन समझ में आया कि नहीं एंड याद रखिएगा ये जो कोलाजन हेलिक्स है दैट इज एक्चुअली डिस्क्राइब्ड बाय रामचंद्रन इसीलिए पूछता है कि रामचंद्रन प्लॉट इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड तो आंसर क्या होगा सिंपली प्रोटीन विच प्रोटीन कोलाजन हेलिक्स एग्जांपल कोलाजन so this is we have ended the secondary protein next class में हम लोग tertiary protein then quaternary protein हम लोग कंटिन्यू करेंगे